देखने में लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव सा टॉप होगा and so sexy from the back. It does not feel like I'm wearing a top worth rupees what like 280 to 90 rupees. You have to buy. मैंने काफी कलरफुल सी चीजें भी ली है. This is not cute. I like your cherry. I love this. Hi guys, what's up and welcome back to a new video. तो मैंने AJIO से काफी टाइम बाद थोड़ा सा टॉप वेयर लिया and I thought let me show you everything I got. Also there's a catch. Everything that I bought is for under 499 rupees, which is like such an affordable price point. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब चीजें ना मैंने सेल टाइम पे ली है, इसलिए इनका प्राइस under 499 है. That is the sale price. आगे बढ़ने से पहले I want to talk about one more thing. So अगर आपको नहीं पता, अगर आप मेरे को Instagram पे नहीं follow करते हो, then let me tell you I am doing a 75 heart style challenge on Instagram. I think I've already done like 10 to 11 outfits. एंड इस चैलेंज का मेन रूल है टू नॉट शॉप फॉर एनीथिंग न्यू. तो जब से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया आई एम नॉट गोइंग टू शॉप फॉर एनीथिंग न्यू फॉर द नेक्स्ट 75 डेज. बट जितनी भी चीज़ें आप इस वीडियो पे देख रहे हो एंड इफ यू आर कंफ्यूज कि मतलब व्हाई एम आई डूइंग अ हॉल व्हेन आई एम डूइंग द 75 स्टाइल हार्ट चैलेंज, ये सारी चीज़ें मैंने मार्च स्टार्टिंग ऑफ फेब एंड में खरीद ली थी. सो दीज आर ऑल लाइक purchases that I've already done. चलो start करते हैं with my favorite item and I'm pretty sure you already have questions about my top, right? So this again is a part of the haul. ये मैंने लिया है from the brand Outright. Now AJIO में there are few brands जिनसे मैं ज़्यादा shopping करती हूँ. Outright is one such brand मुझे इसका collection काफी पसंद है and this I got for 454 rupees and ये मैंने लिया in the size M. It's a peplum top. It's not cropped. ये short length का है. It's in white color and इसमें ऐसे textured fabric है which I really like. I love how fun and playful this top is and it's like so fun. इसका एक्चुअली मैंने रिसेंटली स्टाइल किया था फॉर माई डे 2 ऑफ 75 हार्ट स्टाइल चैलेंज. मैंने इसके साथ पहने थे बूट कट जीन्स एंड देन चंकी वाइट स्लाइड्स, वाइट बैग. बहुत क्यूट आउटफिट था. एंड मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द 75 हार्ट स्टाइल सीरीज देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट, क्योंकि वो सीरीज काफी अच्छी है. इफ आई मे से सो माई सेल्फ, आई एम लविंग डूइंग इट. काफी फन भी है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. तो आपको ना बहुत अलग अलग एस्थेटिक्स और अलग अलग स्टाइल्स मिलेंगे वहाँ पे. सो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू चेक इट आउट. और मैं अपने सेकंड चैनल पे विच इज माई शॉर्ट्स का चैनल, जहाँ पे मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ अब सारे, वहाँ पे भी मैं वो सेम सीरीज अपलोड कर रही हूँ. तो यू कैन ईदर सी इट ऑन माई यूट्यूब शॉर्ट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आई थिंक यू शुड चेक आउट दैट चैनल एज वेल, क्योंकि वहाँ पर काफी यूट्यूब शॉर्ट्स आते हैं और यू कैन चेक इट आउट ऑन इंस्टाग्राम. इस टॉप का बस एक ही प्रॉब्लम है विच इज दैट इट इज एक्सट्रीमली सी थ्रू. नाउ व्हाइट टॉप्स के साथ यूजुअली ये सीन होता है कि वो काफी सी थ्रू होता है, बट ये वाला इन पर्टिकुलर इज लाइक प्योर कॉटन एंड थोड़ा थिन सा मटेरियल है, तो इट्स वेरी सी. तो यू विल डेफिनेटली हैव टू वेयर समथिंग न्यूड इनसाइड इट. नाउ अनदर ब्रांड जिसके टॉप वेयर एंड इन जनरल कपड़े मुझे काफी पसंद है इज ओनली. एंड ओनली इज यूजुअली लाइक अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट सेल टाइम पे काफी सही प्राइस पॉइंट में मिल जाता है. दिस टॉप अगेन आई गॉट फॉर 454 एंड गाइस ये जो 454 है ना, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइसिंग जिसमें मैंने AJIO से टॉप्स लिए हैं. तो बाकी टॉप्स तो इससे भी सस्ते हैं विच इज लाइक such a great thing. I have to say I love the size. It's fitted, it's body hugging, but it's not too tight and it's like just sitting very nicely on my body. I'm loving it. Like shoulder का fit भी काफी अच्छा है. Even the sleeves, the way everything about this top, it's just 10 on 10. मैंने ये लिया तो सिर्फ कलर के लिए. I am not going to deny that. I am loving pink a lot since like the past year and I am fully into the pink bandwagon now. There's no looking back. And ये shade of pink भी काफी cute है. I don't think I have like any top in this specific shade of pink. It's like very bubblegum, very Barbie pink of sorts. It's a great everyday top. Like you can wear it for college, for office, just for chilling. You can dress it up, you can dress it down, and because of the color, it is kind of like a statement piece, yet still very comfortable and thoda sa basic as well. So it's like a mix of lot of things, and it's a great piece. The fabric is amazing. It's super stretchable और ये बहुत comfortable है पहनने में. It's like a ribbed fabric, which is why again इसी वजह से ये ज़्यादा stretchable भी है. And originally इसका price लिखा हुआ है 1499. I highly recommend only as a brand for clothing, especially like Topwear. They are doing amazing with their Topwear. Even like those जो पीटर पैन कॉलर वाले टॉप्स नहीं होते, इफ यू लाइक सच टॉप्स आपको ओनली में बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा. आई लिंक सम इन द डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट, बट या ऑल द लिंक्स विल बी देयर इफ यू वांट टू परचेज एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. Let's move on. Okay, another pink top, and now that I see both these tops, मुझे अब realize हो रहा है कि this is more like a bubblegum pink, like a more Barbie pink, and that top was more like a magenta pink color actually.
This top I fully regret getting this in L size and not exchanging it for a smaller size. ये ना मैंने बहुत late try on किया और इसकी वो window खत्म हो चुकी थी exchange करने वाली. Don't get me wrong, I love baggy clothes. You know that baggy t-shirts, baggy shirts, like they are my thing. But मुझे ऐसा लगा कि इस silhouette में और इस top में specifically, it is supposed to be a little loose but not जितना लूज ये मेरे ऊपर है, because whenever I'm tucking it in something ना, it's not giving like a flattering look, so I have to figure that out. Okay, after putting on this top, I'm realizing it's not too bad. Like जब मैंने पहले पहना था मुझे इसका साइज थोड़ा ज़्यादा weird लग रहा था, but right now with this skirt, I don't think it's that bad and I can work with this top for sure. Okay, I got it for 383 rupees, so I mean 383 में who am I to complain about it? ये मैंने लिया in the L size as I said before. It's from a brand called Iki Chic, like IKI Chic. It's the round neck top with ruffle accent, and the ruffle accent is around the shoulder area. I think it's a great like casual everyday piece. You wear it with jeans, you wear it with white trousers, like it'll look amazing with white trousers, denim skirts, or even like a white denim skirt, maybe like a white denim maxi skirt with a slit, something along those lines. Oh my god, I can imagine styling this in so many ways. Okay, so now the last colorful top of this video is again like a super colorful one. Now आपने notice किया होगा कि मैं yellow clothing ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, and I don't know, somehow I never end up buying anything yellow. I just have one yellow top, yeah, this one. This is the only yellow top, and this one also is like a very lemon yellow type. This is more of like a butter yellow color, and oops. And ये वाला shade of yellow is going to be very trendy this spring and summer. अगर सच बताऊँ तो ये मैंने इसलिए लिया because मुझे सिर्फ 304 rupees का पड़ा है. Yes, I could not miss that chance कि मैं इसको ना लूँ इतने सस्ते में, because it's a very cute top. Okay, so the top is kind of on now. All you have to do is take these like straps and just tie them in the back. I tied my hair with the string. It's actually a halter neck top, and एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि लिनन फैब्रिक में है, तो इस प्राइस पॉइंट पे यू यूजुअली ऑलवेज गेट पॉलिएस्टर. तो ऐसे कुछ कॉटन लिनन वगैरह का सस्ते प्राइस पर मिलता है, ऑलवेज एंड अप बाइंग इट. इवन दिस वन इज लाइक कॉटन, एंड मोस्ट ऑफ द टॉप्स दैट आई गॉट आर लाइक ऑफ वेरी गुड फैब्रिक. दे आर नॉट दैट चीप, वेरी इची शीन वाला पॉलिएस्टर फैब्रिक वैसे वाले पे नहीं. आई डोंट प्रेफर बाइंग एनीथिंग इन दैट फैब्रिक टू बी ऑनेस्ट, बट या इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है. आई थिंक इट्स अ वेरी क्यूट वेकेशन टॉप, लाइक it's giving beaches, it's giving vacation, and I think imagine wearing this with like cotton and linen white pants on a vacation. It will look so bomb. Like you can style it very extensively, even with like blue jeans, like a mid-wash blue jeans, boot cut jeans जो मैंने आपको पिछले आउटफिट में दिखाई थी उसके साथ भी बहुत cute लगेगा. So the styling opportunities are a lot here. So I bought one more top which is from this brand called Cation, like Cation. I don't know how to pronounce it. This was for above 499 rupees, but I've already returned it because the quality of the top was not it. It looked really bad. I got it mainly because इसके ना sleeves में बहुत cute सी bow detailing थी, but it looked so horrendous when it came, and the fabric was like very cheap, sheen, polyester, like very weird sort of fabric. It was not looking good. Even the bows were like very weird, बहुत ऐसे like it was not it. They were not holding their shape as well. So overall, basically, it was not a good top, and I already returned it, so I can't show it to you. But yeah, like you can skip this. Moving on to our neutral items now. इससे start करते हैं. I love this top actually. I love the color of this top, and मेरे पास ना काफी like nude beige shade के कपड़े. But to be honest, I don't have anything in this specific shade. ये काफी से cool tone, brown, beige का in between shade है, and I loved the color. I got it mainly because of the color. ये पहनने में इतना soft और comfortable feel हो रहा है. Like वो जो feel होता है ना against your skin, it is really nice. Now I downsized in this top क्योंकि मुझे ये बहुत fitted body hugging look में चाहिए था. If you don't want that, then go with your normal sizing. You can wear it with jeans, trousers, skirts. Again, you can play around with this a lot. I have beige pants, I can wear it with that. I have camel pants, I can wear it with that. I have a pair of brown pants जिसके साथ ये काफी cute monochrome outfit बन सकते हैं. और I think even with like denim, this shade will look really nice. और black, actually black के साथ भी ये बहुत अच्छा लगेगा. Now this is from a brand called R&B, and इनका ना sizing I will say runs a little large for sure. पहले मैंने ये M size में मंगाया था and it did not give like that body hugging fit, तो मैंने इसको exchange करके S size में मंगाया है. इसका price is 499. It's already very inexpensive, like under 500 है, and then I got it for 400 rupees. So that is like
of course, amazing, great, we love that. And it's a cute top. I love it. I love the fabric. And मैंने इसको अभी तक wash नहीं किया है, so I cannot say कि how will it hold up, like how the fabric will hold up after a few washes. But अभी तो ये अच्छा लग रहा है. इस बार मैंने एक चीज सोची थी कि I'll try to find items in like colors which I don't have a lot of. So like the brown, the yellow, and then even a grey top. I don't have like a good solid grey top as far as I know, and grey again looks great with black. नेवी ब्लू, व्हाइट, काफी कलर्स का अच्छा लगता है. एक्चुअली इट गोज विद ऑलमोस्ट एवरी कलर टू बी ऑनेस्ट. इसका ब्राइट शेड तो काफी अच्छा है. इवन ब्लू लुक्स अमेजिंग विद ग्रे. ग्रे और ब्लू भी एक काफी अंडररेटेड कलर कॉम्बिनेशन है. एंड हाउ कैन आई फॉरगेट रेड एंड ग्रे. रेड एंड ग्रे आल्सो लुक्स अमेजिंग. सो एक ग्रे टॉप तो हर चीज से चल जाएगा. दिस इज द चीपेस्ट आइटम ऑफ दिस वीडियो एंड आई गॉट इट फॉर 290 rupees, like something along those like under 300 rupees. And अगर मैं सच बताऊँ, I did not have a lot of expectations from this top. Like considering the price point, I was like कि थोड़ा decent सा भी आ जाएगा तो मुझे चल जाएगा. But I love the top. The top is really good. इसका जो fabric है, it is a little like it's not that soft वाला fabric, थोड़ा सा structured, hard fabric है, but it is still stretchable and it fits me like a glove. I love the fitting. ये मैंने लिया in the size L. It's from a brand WKND. Like this gives the look of a corset top. To be honest, like जो silhouette है, just look at it, it looks very different. So they have kind of this corset detailing built here, but इसके अंदर सा piping नहीं है. So it's not like a proper corset, but none of this stitching और ribbing के through corset वाला look दिया है. And it's like super fitted. एंड नीचे से if you notice वेस्ट वाले पार्ट में टेपर्स डाउन, तो वेस्ट में तो ये बिल्कुल बॉडी हगिंग लुक ले लेता है. एंड then it's fitted on the sleeves as well. So overall it's a very cute top. That's it for all the tops that I got from AJIO. Now एक last top बचा है which I got from Myntra. Again like I got it before starting the challenge, but I know कि अभी मैं कुछ टाइम तक शॉपिंग नहीं करूंगी, so I thought कि ठीक है मैं इस टॉप को भी आपको इसी वीडियो में दिखा देती हूँ. This is from Mango. This one I think I got lucky with it because I got it for super inexpensive price point. ये मेरे को मिला है for 600 rupees and it's not of course part of the under 500 AJIO tops वाला gang, but I still wanted to show you this. Now this one originally is for 1490 and I got this in the size L. I think this was the last size. This was 15 sizes, which I mean Mango should work on the sizing for sure. Like just having sizes up to L is a little icky for the current times, but okay, we'll let that go for now. It's a solid white t-shirt, but it has the cutest detailing in the front here. The detailing because of which I got it is this text which says I like you cherry much, and then यहाँ पे cherry भी बना हुआ है. Now I am obsessed with cherries. I am loving red lately, and anything with a pop of red I think always looks amazing. You know, this will look great with jeans and it looks amazing with like baggy white trousers. I have a pair of trousers from Organic, उसके साथ तो बहुत amazing लगेगा. And I'm going to do that look soon for sure. मैंने expect नहीं किया था कि इसकी length इतनी लंबी होगी. मुझे थोड़ा सा short length ज़्यादा पसंद है. Like this is usually अगर इस length का कोई top होगा, I'll definitely tuck it because I think it looks a little awkward and it divides my body in very awkward proportions. So I thought कि थोड़ा यहाँ तक का length होगा, but then if you are someone who loves longer length के tops, you're going to love this. Just a reminder, I like you cherry much. And that's it for this video. I hope you enjoyed watching it. If you want to purchase anything, all the links will be there in the description box. Subscribe करना बिल्कुल मत भूलना, so click on this red button and I'll see you next time. Bye, I love you. Also comments बताओ what other videos do you want to see. So where you wanna go? Let's see it all. Selfies on the Great Wall, maybe the Taj Mahal. Hey, we could stay out late after dark. Take a gamble in Monaco. We could swim with the sharks.